Hello everyone. In previous lecture, I started new chapter that was about balancing, and we discussed the basic introduction need for balancing, and we started the topic balancing of a single rotating mass by two masses rotating in different plane, and we discussed that the single balancing mass in same plane of rotation as that of disturbing mass as centrifugal force are balanced, and the two forces are equal in magnitude and opposite in direction. But there was a problem with that arrangement, that there was rise of couple because of single balancing, and therefore we for complete balancing we used the approach of two balancing masses which are placed in two different planes parallel to plane of rotation of disturbing mass in such a way that it satisfies two conditions were there. First was of static balancing and second was of dynamic balancing. The static balancing condition says that the net force acting on shaft should be equal to 0, then it will be in static balancing, and net couple on, which means due to dynamic force on shaft, should be equal to 0. In other words, the algebraic sum of moment about any point must be equal to 0. And these conditions, condition 1 and 2 together gives the dynamic balancing, and two possible cases may we get for the two balancing masses. First one is the plane of disturbing mass may be in between plane of two balancing masses, and second is plane of disturbing mass may lie on the left or right of the two balance planes containing balancing masses. So let us discuss these two cases one by one. The first case is when the plane of disturbing mass lies in between the plane of two balancing masses. जो प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मास है वो कहाँ पे है? बिटवीन द प्लेन ऑफ टू बैलेंसिंग मासेस, जो दो बैलेंसिंग मासेस है उन दोनों के बीच में है. कंसिडर अ डिस्टर्बिंग मास m lying in a plane A to be balanced by two rotating masses m1 and m2 lying in two different planes capital L and capital M as shown in figure here. This is our mass, which is disturbing mass small m, and here are two balancing masses m1 and m2 which are in different planes L and M, and they are rotating and mounted on a same shaft, that is our PQ, and the distance from disturbing mass to m1 is L1 and from disturbing mass to m2 is L2, and the radius of rotation here there is for disturbing mass it is small r, and for balancing mass it is r1 and r2. This is the r1 and r2. Now let the r small r and r2 be the radius of rotation in the plane. So here the r will be this, then r1 will be this, r1 will be this, r2 will be for mass m2, or we can say for plane A there will be r, for plane L there will be r1, and for plane M there will be r2. Let the L1 be the distance between the plane A and L. जो A और L के बीच का डिस्टेंस है वो L1 है. L2 is the distance between A and M. जो A है और M है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस L2 है, और L जो है दैट इज़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन L एंड प्लेन M, उन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस है. Now we know that the centrifugal force exerted by mass m in the plane A is given by Fc is equal to m omega square r. जो यही सेम डायग्राम है, ठीक है. ये डायग्राम हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि जो एंगल है वो डिफरेंट इंडिकेट कर सकते हैं, कि जैसे कि ये
प्लेन है, यहाँ पे हमारा मास m है और उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है Fc सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो बैलेंसिंग मास है, सपोज दिस इज एट द R1 एंड दिस इज एट R2, दिस इज अवर M1 मास एंड दिस इज M2 मास। जो रेडियस ऑफ रोटेशन है वो सबकी अलग अलग है, ठीक है। और जो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो कितना होगा, m है तो मतलब m ओमेगा स्क्वायर r। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, r1 है, इसलिए m1 ओमेगा स्क्वायर r1। फिर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू m2 ओमेगा स्क्वायर r2। So this will be the centrifugal force values for different rotating masses, and these are m1 and m2 are our balancing masses. So first Fc will be acting on in plane A to the mass m. Similarly, centrifugal force will be exerted on m1 at a plane, that will be m1 omega square r1, and the centrifugal force exerted by mass m2 in plane m will be equal to Fc2 m2 omega square r2। ठीक है, जो ये प्लेन डायग्राम था उसमें भी अगर इंडिकेट करना हो तो ये यहाँ पे m है, यहाँ पे r आएगा, इसका प्लेन था वो ए प्लेन था। यहाँ पे बैलेंसिंग मास जो है वो m1 यहाँ पे था और m2 यहाँ पे, ये दोनों की रेडियस r1 r2। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी Fc सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो ओमेगा है दैट इज द रोटेशन, दैट विल बी द सेम फॉर बिकॉज दे आर माउंटेड ऑन सेम शाफ्ट। एंड हियर इट इज द प्लेन L and this is the plane M, and there will be centrifugal force on this two as well. So here will be, it will be m2 omega square r2, and here it will be, sorry, m1 omega square r1, and here it will be m2 omega square r2. So since the net force acting on the shaft must be equal to 0, जो नेट फोर्स शाफ्ट के ऊपर लग रहा है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। therefore the centrifugal force on the disturbing mass must be equal to the sum of centrifugal force on balancing masses। जो भी नेट फोर्स लग रहा है शाफ्ट के ऊपर वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है डिस्टर्बिंग मास की वजह से मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द बैलेंसिंग मास। यानी कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। सो हियर वी कैन राइट Fc इज इक्वल टू Fc1 प्लस Fc2। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स of disturbing mass is equal to centrifugal force by balancing masses is equal to the sum of balancing masses centrifugal force. So we can simplify in this form, we can write down the equation, and here the omega is same, so omega will be cancelled out, so we will get the equation as mr is equal to m1 r1 plus m2 r2, and this equation is for static balancing because centrifugal force is acting, and this equation is for static balancing। and for dynamic balancing we have to find out the couple। now in order to find the magnitude of balancing force in plane L or the dynamic force at the bearing Q of the shaft, take the moment about P and Q is the point of intersection of the plane M and the axis of rotation। so therefore Fc1 is equal into cross L is equal to Fc cross L2। अभी यहाँ पे हमको कौन से पॉइंट पे मोमेंट लेनी है, वी हैव टू टेक मोमेंट ऑन द प्लेन L, sorry, or take the moment on the about
पी पॉइंट, जो पी पॉइंट है वहाँ पे मोमेंट लेनी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एम एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंसिंग फोर्स इन प्लेन एल, जो प्लेन एल है उसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंसिंग फोर्स है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। सो लेट मी शो यू इन द फिगर कि यहाँ पे मोमेंट कैसे ली जाएगी। सो यहाँ पे हमको ये पी पॉइंट है वहाँ पे मोमेंट लेनी है। सो मोमेंट लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एक कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट विल बी FC1, और जो डिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल L। और जो दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है यहाँ पे, FC इंटू L2, जो L2 है वो है। तो क्या होगा यहाँ पे इक्वेशन, FC क्रॉस L2 इज इक्वल टू FC1 क्रॉस L। So this will be the equation, and you have to put the value of FC1 and FC. So here the equation will be given by FC1 cross L is equal to FC into L2. So we will write FC as is equal to m omega square r and FC1 is equal to m1 omega square r1, और जो ओमेगा स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर वो दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो हमको इक्वेशन कैसा मिलेगा यहाँ पे, m1r1l इज इक्वल टू mr_l2, ठीक है। सो यहाँ पे m1r1 हमको फाइंड करना हो तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो मैग्नीट्यूड है बैलेंसिंग फोर्स का एट द प्लेन L, दैट विल बी m1r1 इज इक्वल टू mr क्रॉस L2 upon L. So this will be the equation for m1r1 or the centrifugal force, and similarly we can find for the plane M, or we can say taking moment about Q point, जो opposite point है वहाँ पे moment find करेंगे तो क्या होगा, FC2 क्रॉस L is equal to FC क्रॉस L1, जो यहाँ पे let me show you, Q पॉइंट पे मोमेंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी हियर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC क्रॉस L1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो डिस्टेंस है FC2 इंटू क्रॉस L, सो FC2 क्रॉस L। सो दिस विल बी द इक्वेशन, and by solving this we will put here FC2 is equal to m2 omega square r2 cross L, and FC is equal to m omega square r into L1. We will get m2 r2 in cross L is equal to mr cross L1. So this is for the case where the balancing masses are on the two sides of the unbalanced mass. Now the second one is when the plane of disturbing mass lies on the one end of the plane of balancing masses. जो भी डिस्टर्बिंग मास है वो एक एंड पे है और जो बैलेंसिंग मास है वो दूसरी साइड पे है. So in this case, suppose the mass m lies in plane A and the balancing masses lie in plane L and M. Here this is our mass m, or we can say this is our which we have to balance or unbalanced mass, and for the unbalanced mass there are two balancing masses. First one is m1 and m2 mass. So they are on the one side, that are the two planes L and M, and are on the one side. Here it is on the right side. It may be on the left side as well, but here both the balancing masses are taken on the right side. We will from this view, from this side view, we will get in this way. They are mounted on the shaft. So we have to find first of all the centrifugal forces. Centrifugal forces will be FC. Here it will be FC1. Here it will be FC2. So all the centrifugal forces, here it will be m omega square r,
here it will be m1 omega square r1, it will be m2 omega square r2, and we will find also balance the couple as well. So taking the couple at 2 points P and Q, we will get the centrifugal force. For first of all, let us take the couple at point P, we will get Fc cross L2 is equal to Fc1 cross L. Here the L is taken from this distance from L plane, the L2 is taken here and L1 is taken over here. So we will get the similar equation as previous, and if we take at the Q point, we will get the Fc cross L1 is equal to M2 Fc cross, there will be Fc, here it will be Fc cross L1, here we are taking at the moment at this point, so this will be not considered, only considering Fc2 minus Fc2 cross L is equal to 0. So in this way we will get the equation. So we must consider two cases, and we have to balance the system. So Fc plus Fc2 is equal to Fc1. So यहाँ पे जो Fc है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और Fc2 है, उन दोनों को सम करेंगे. यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस है Fc और Fc2, इन दोनों का सम क्या होगा, इक्वल टू Fc1. ठीक है. जो अगला वाला केस था उसमें बैलेंसिंग मास बीच में था, जो अनबैलेंस मास था वो बीच में था, यहाँ पे साइडवेज में है. ठीक है. सो वी विल गेट m ओमेगा स्क्वायर r प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर r2 इज इक्वल टू m1 omega square r1, and we will find the equation for the same. Here it is mr plus m2 r2. Here what happens, the centrifugal force will be equal to m omega square r1, r. Here it will be m1 omega square r1, and here it will be m2 omega square r2. So now we will balance this. So what happens, the m omega square r on the one side and m2 omega square r on the other side. So we will balance by this equation, m1 omega square r1, and omega square is the same, so it will be cancelled out because it is mounted on the same shaft. So it will be cancelled, and we will get mr plus m2 r2 it is equal to m1 r1. Now to find the balancing force in the plane L or the dynamic force at the bearing Q of the shaft, take the moment about P, which is at the point of intersection of the plane M and axis of rotation. So here you can see that to find the balancing force in the प्लेन L, जो प्लेन L है वहाँ पे हमको बैलेंसिंग फोर्स फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड द m1 r1. सो फॉर फाइंडिंग दैट, और द डायनेमिक फोर्स एट द बेयरिंग Q ऑफ द शाफ्ट, और जो Q पॉइंट है, सपोज यहाँ पे बेयरिंग होगी तो वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो हमको फाइंड करना है. सो टेक द मोमेंट अबाउट P विच इज़ एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन M एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ M. सो यहाँ पे मोमेंट हमको कहाँ पे लेना है, जो P पॉइंट है वहाँ पे मोमेंट लेना है, और जो हमको जो भी M इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो भी यहाँ पे
ये प्लेन एम और जो शाफ्ट का इंटरसेक्शन है वो पॉइंट यानी कि पी पॉइंट पे मोमेंट हमको फाइंड करना है. सो हियर द मोमेंट विल बी गिवन बाय द एफ सी वन क्रॉस एल. जो एफ सी वन है वो कहाँ पर है? एफ सी वन विल बी एट दिस पॉइंट. एफ सी वन क्रॉस एल यानी कि ये एल इन इज इक्वल टू एफ सी टू क्रॉस एल टू. जो यहाँ पे एल टू है और यहाँ पे एफ सी है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. ठीक है, लेट मी मेंशन हियर अगेन, दिस इज द एफ सी and here it will be FC1. This will be the L distance and this will be the total will be L2 distance. So we will find the this because we know that the FC is equal to m omega square r and FC1 is equal to m1 omega square r2. So here the equation we get, which is similar to the earlier one, m1 r1 cross L is equal to mr cross L. So we can write m1 r1 is equal to mr cross L2 by L. So we will get the m1 r1, that is the balancing force on the plane L. Similarly in order to find out the balancing force in the plane M, जो plane M है वहाँ पे हमको अगर बैलेंसिंग फोर्स फाइंड करना है और द डायनेमिक फोर्स एट द बेयरिंग P, जो P है वहाँ पे डायनेमिक फोर्स फाइंड करना है ऑफ द शाफ्ट. सो टेक द मोमेंट अबाउट Q, जो Q पॉइंट है वहाँ पे हमको मोमेंट लेना है विच इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन L एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो देयरफॉर वी विल गेट Q पॉइंट पे मोमेंट लेंगे तो वैल्यू मिलेगी, दिस विल बी द एफ सी टू क्रॉस एल इज इक्वल टू एफ सी क्रॉस एल वन. और जो एफ सी टू है उसकी वैल्यू मालूम है एम टू ओमेगा स्क्वायर आर टू, और एफ सी है उसकी वैल्यू भी हमको मालूम है एम ओमेगा स्क्वायर आर क्रॉस एल. So by simplifying this we will get m2 r2 cross L is equal to mr cross L1. So m2 r2 will be equal to m omega square. We can write, simplify the same way, we will find the m2 dot r2 as we can simplify mr cross L1 by L. So that will be the balancing force in the plane M. So in this way we can find the balancing of the single mass, and in next lecture I will discuss about the balancing of several masses rotating in the same plane. So this is it for today's lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.